Good morning to all of you. Good morning. So ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ୱିକ୍ ରେ जो मेंस मॉक टेस्ट कंडक्ट हेतिला तार आज हमें टोटल 6टा क्वेश्चन रो आंसर राइटिंग डिस्कस करबा केमिति गोटे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर आमे फ्रेम करि परिबा ईच एंड एवरी क्वेश्चन रो सेटा आमे डिस्कस करबा एंड ता संगे जहां भी कांसेप्ट सेतरे इन्वॉल्व अछि जहां भी कीवर्ड सेतरे एड्रेस करिया कोइछि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑल वी विल डिस्कस एवरीथिंग बिफोर दैट मते टे कहि दियंतु ऑडियो मोर क्लियर आसुछि कि नाही एंड स्क्रीन रे मुझे जहाँ एनोटेट करुँची सेटा भी आपको विजिबल होची कि नहीं ओवरऑल बफरिंग प्रॉब्लम अच्छी कि नहीं इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जो माने भी लाइव अछंती तांको भितर मते केही जणे भी एटी इन्फॉर्म कर दियंतु ऑडियो एंड वीडियो क्लियर अच्छी कि नहीं ओके थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो एंड एटी पर क्वेश्चन मु आपन को 10 to 15 सेकंड्स टाइम भी दे देबी निजे टिके पढिबा को एंड ताकू प्रोसेस करिया को ब्रेनस्टॉर्म करिया को एंड आई विल हाईली एडवाइस कि समस्त कॉपी पेन नै कि बसिबे स्ट्रक्चर केमती करा जाउची आंसर एंड किछि भी की टर्म्स हैला कि किछि कांसेप्ट हैला जदि आपन नोट्स नाही ताको ऐड करिवे ठीक अछि एंड एठी जेतेबेले मु आंसर राइटिंग एठी डिस्क्राइब करबी आई विल यूज शॉर्ट फॉर्म्स हे गला कीवर्ड्स हे गला एंड एठी 250 to 300 वर्ड्स जो लिमिट रहूची एबे पूरा तो आंसर मु लिखिबी ने स्क्रीन रे सो एथि पई कि मु एडवाइस करे कि समस्ते नोट्स नै कि बसिबे राइट फर्स्ट क्वेश्चन examine the major features of the economic system during the Delhi Sultanate with special reference to land revenue, trade and agricultural expansion. First question ta ku read karantu 10 seconds mu time deuchi then mu aku discuss karibi. ओके सो क्वेश्चन कौन पचारछि कि दिल्ली सल्तनत टाइम रे तांकर जहा इकोनॉमिक सिस्टम थिला तार जो मेजर फीचर्स ऑफ व्हाट मेजर फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत ए पीरियड रे जहा इकोनॉमिक सिस्टम से टाइम रे थिला तार मेजर फीचर्स को एग्जामाइन करबा को कहिछि with reference to these three land revenue trade and agricultural expansion ठीक अछि मेजर फीचर्स तमे एक्सप्लेन करिवो किंतु स्पेशल रेफरेंस दबो लैंड रेवेन्यू ट्रेड आउ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन को एबे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बुझियला देन वी विल स्ट्रक्चर द क्वेश्चन इन द सेम
इंट्रोडक्शन एंड बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट इंट्रोडक्शन आमर टू दी पॉइंट जहाँ क्वेश्चन पचार गोटे मूवी ट्रेलर भाया गोटे शॉर्ट इंट्रोडक्शन आमर रहिबो इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड बॉडीटा आमर स्ट्रक्चर्ड हबो सब हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स रे एंड आम एग्जांपल्स दबा जोटी रेलिवेंट सब जगह नुहे एंड कंक्लूजन गोटे से शॉर्ट एंड ब्रीफ कंक्लूजन रे आमे आंसर टी को एंड करबा ठीक अछि इंट्रोडक्शन रे हमें कौन कौन इंक्लूड करबा एठी हमें एमती स्टार्ट करि परिबा कि इकोनॉमिक सिस्टम पचार ना दिल्ली सल्तनत रो सो द इकोनॉमी ऑफ दिल्ली सल्तनत केबेठु केबेठे हेतला 13th to 16th सेंचुरी 13th to 16th सेंचुरी एटा प्राइमरीली कौन थिला एग्रेरियन थिला व्हिच इज सपोर्टेड बाय स्ट्रक्चर्ड रेवेन्यू सिस्टम ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपैंडिंग ट्रेड नेटवर्क्स तापरे ग्रेजुअल एग्रीकल्चरल ग्रोथ एग्रीकल्चर तो हम एटी मेंशन कले ग्रेजुअल एग्रीकल्चरल ग्रोथ ठीक अछि एंड इट रिफ्लेक्टेड both continuity with earlier systems and new administrative innovations आगुरु जहाँ सिस्टम चली ताकू भी किछटा से कंटिन्यू करथिले आ ता साथ ही साथ से किछि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस भी करथिले ठीक अछि ये हैला हमर इंट्रोडक्शन एमती स्ट्रक्चर करिवे ताकू निज वर्ड रे ताकू लिखिबे एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम रु हमें स्टार्ट करबा बॉडी रे हमर इंक्लूड हबो फर्स्ट सब हेडिंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम लैंड रेवेन्यू सिस्टम से टाइम रे कोन थिला स्टेट रो मेन इनकम कोडु आसुतला मेन इनकम लैंड रेवेन्यू रु आसुतला एंड लैंड रेवेन्यू को कोन कहउतले खरज रूलर्स जेमति कि अलाउद्दीन खिलजी हेले लैंड वाज मेजर्ड एंड रेवेन्यू फिक्स्ड लैंड को मेजर करिकरी रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जाउतला ठीक अछि अप टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस दीटा पॉइंट है मेन इनकम है अलाउद्दीन खिलजी टाइम रे कौन होतिला देन हमर थर्ड पॉइंट आसीबो इक्ता सिस्टम अंडर लैंड रेवेन्यू इक्ता सिस्टम असाइन्ड लैंड रेवेन्यू राइट्स टू नोबल्स ठीक अछि नोबल्स मान को कौन कहउतले इक्तादार्स सो एठू आसिला नाटा इक्ता सिस्टम काइना लैंड रेवेन्यू राइट्स तांको असाइन कर दिया जाउतला टू नोबल्स और इक्ता दार्स मु शॉर्ट फॉर्म रे लिखुची काहेकि ना जदी मु पूरा 250 वर्ड्स रे सब आंसर एठी लेखिया गु जीबी ताहाले सेशन टे अब 3-4 घंटा रहि जिवो हु कलेक्टेड टैक्सेस एंड मेंटेन द ट्रूप्स देन फोर्थ मोहम्मद बिन तुगलक लेटर पछरे कोन हैला मोहम्मद बिन तुगलक कोन कले ही अटेम्प्टेड रिफॉर्म्स लाइक डायरेक्ट कलेक्शन से डायरेक्टली कलेक्ट करिया को ट्राई कले थ्रू द लिमिट तांको बट एई जिंसर तांको लिमिटेड सक्सेस मिलिला किंतु से डायरेक्ट कलेक्शन करिया को रिफॉर्म बनेइतिले सेकेंड हमें देखिबा ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स रे इंटरनल ट्रेड तांकर फ्लोरिश होतिला गुड इंटरनल ट्रेड कैरी आउट होतिला से टाइम रे ड्यू टू इम्प्रूव्ड रोड नेटवर्क्स एंड अर्बन सेंटर्स जेमति कि दिल्ली हैला मुल्तान लाहौर ओके एक्सटर्नल ट्रेड से मैंने कहा सहित करूथिले एक्सटर्नल ट्रेड कनेक्टेड इंडिया विथ सेंट्रल एशिया देन पर्शिया सहित से मैंने करूथिले मिडिल ईस्ट सहित करूथिले एंड व्हाट वेर द एक्सपोर्ट मटेरियल्स थिला टेक्सटाइल्स स्पाइसेस इंडिगो एंड इंपोर्ट करूथिले हॉर्सेस तांकर मिलिटरी पर्पस पाइंगी तांको हॉर्सेस दरकार थिला लग्जरी गुड्स लग्जरी आइटम्स बा लग्जरी गुड्स ठीक अछि एंड अलाउद्दीन खिलजी से कोन करथिले मार्केट रिफॉर्म्स आनिथिले
मार्केट रिफॉर्म्स जेमती की मार्केट रिफॉर्म से टाइम रे कौन कला इट रेगुलेटेड द प्राइसेस प्राइस को से कंट्रोल करूथला एन्श्योर्ड सप्लाई एंड कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन मन रहिला देन एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एग्रीकल्चरल थर्ड सब हेडिंग पकेबे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन expansion of cultivation into forest and wasteland areas increased productivity new crops introduce हेतला से टाइम रे जेमती की राइस varieties हला sugar cane cotton irrigation methods use होतला use of irrigation methods like जेमती wells हला canals हला notably फिरोज शाह तुगलक अंडर रे then growth of rural settlements supported the agrarian base each and every pillar हमें डिस्कस कले कंक्लूड करबा एबे आंसर टिको कंक्लूजन रे कोन कोन इंक्लूड रहइबो दिल्ली सल्तनत इकोनॉमी जोटा की थिला कोन स्टेट कंट्रोल्ड एग्रेरियन सिस्टम with vibrant trade plus gradual agricultural expansion एमिति नहीं कि से सिस्टम रे से टाइम रे जहाँ भी रिफॉर्म्स आसुतला से जो जिनस भी कैरी आउट करदले सेतरे किछि प्रॉब्लम आसुनतला सो डिस्पाइट चैलेंजेस एई जो डेवलपमेंट गुडी को रहिला दे लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर मुगल इकोनॉमिक कंसोलिडेशन राइट ठीक अछि next question the Delhi Sultanate period witnessed significant urban growth and expansion of towns discuss the factors responsible for urbanization during the period read the question once again ओके सो क्वेश्चन पचारची दिल्ली सल्तनत पीरियड जो थिला से टाइम रे अर्बन ग्रोथ एंड टाउन्स रे एक्सपेंशन हेतिला सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हेतिला सो डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर दिस अर्बनाइजेशन ये जो अर्बन ग्रोथ और टाउन्स रो एक्सपेंशन हैला ता पछरे कोन सबु रीजन थिला कोन फैक्टर सबु रिस्पांसिबल थिला तांकर ग्रोथ रो अर्बनाइजेशन रो ड्यूरिंग दैट पीरियड ओके इंट्रोडक्शन में हमें लिखबे दिल्ली सल्तनत 13 थ्रू 16th सेंचुरी प्रीवियस क्वेश्चन हमें डिस्कस कले इट मार्क्ड अ नोटेबल फेज of urban growth in India with the rise of administrative, military, commercial centers and ये जो urbanization हैला this urbanization was driven by political consolidation and economic changes
पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हमें फर्स्ट देखिबा political and administrative factors. Establishment of a centralized state led to the growth of capitals like Delhi. Second, provincial centers develop hitla. Provincial centers जेमती कि हमर लाहौर हैला, मुल्तान हैला, दौलताबाद हैला, developed as administrative hubs. Provincial centers मान को administrative hubs बनाई दिया गला. Presence of officials, soldiers, nobility, ये कौन कले? Increase the urban population. Second, military and strategic needs. Military और strategic needs कौन थिला? Construction of fortified towns. Fortified towns से माने construct करी थिले and garrison centers. And garrison centers. Okay. कंटिन्यूस कैंपेन से माने रन करूथिले जोथि पई कि लॉजिस्टिकल बेसिस दरकार थिला प्रमोटिंग टाउन डेवलपमेंट. लॉजिस्टिकल बेस नीड जो तांको होउथिला कंटिन्यूस कैंपेन रन करिवा पई कि इट फर्दर प्रमोटेड द टाउन डेवलपमेंट. Trade and commerce. Expansion of internal and external trade. Previous question रे हमें देखले internal हो external trade हो से मानकर flourish करूथिला. Expansion of internal and external trade networks. Then जो cities गुड़िक थिले they transformed or emerged as market centers जहाँ को मंडीज को आ जाउतिला. मंडीज एंड से माने ट्रेड कहा सहित करथिले सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एगुड़िक सब एक्सटर्नल ट्रेड रे ताकर जीवो राइट. सो इट बूस्टेड अर्बन प्रॉस्पेरिटी. फोर्थ, growth of crafts and industries. Crafts and industry रे से टाइम रे जो आर्टिसन क्लासेस थिले तांकर राइज देखिबा को मिलिला. राइज ऑफ आर्टिसन क्लासेस, वीवर्स हेले, मेटल वर्कर्स एटसेट्रा. And से टाइम रो जो रॉयल पैट्रोनेज थिला they actively encouraged the handicrafts and production centers. Royal patronage encouraged handicrafts and production centers. ठीक है जी. Urban areas became hubs of manufacturing and skilled labor. Urban areas कौन manufacturing and skilled labor रो hub भाବରେ ट्रांसफॉर्म हेतिला. Skilled labor. Monetary economy. Monetary economy कौन थिला तांकर? से standardized coin introduce करथिले जेमति कि टंका, जिताल जोटा कि ट्रेड को फर्दर फैसिलिटेट करूथिला. And they shifted from barter to cash economy, strengthened the urban markets. Sixth रे हमें कौन देखिबा? Agricultural surplus. एग्रीकल्चरल सरप्लस रे से टाइम रे रेवेन्यू सिस्टम इम्प्रूव्ड रेवेन्यू सिस्टम थिला that ensured steady
surplus expansion, and surplus supported non-agricultural population in towns. राइट बॉडी रे आमी जहाँ जहाँ एड्रेस करिबार थिला क्वेश्चन और डिमांड ताकू सब हमें डिस्कस कर सारचे देन वी विल कंक्लूड कंक्लूजन रे अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग Delhi Sultanate, it was a result of state policies, then trade expansion and economic diversification, laying the foundation of more complex urban economy of Mughal period. Next question. Analyze the social structure and cultural developments during the Delhi Sultanate period. How did interactions between different communities shape the medieval Indian society? Read the question once. क्वेश्चन पचारला क्वेश्चन गोटे फर्स्ट गोटे स्टेटमेंट देला कि एनालाइज करबा को पचारची ओके नोट एनालाइज करबा को फर्स्ट क्वेश्चन कहिची कि कोन सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल डेवलपमेंट जोटा दिल्ली सल्तनत पीरियड रे चली थिला दिल्ली सल्तनत पीरियड टाइम रे जहां भी सोशल स्ट्रक्चर फर्स्ट डिमांड of the question first social structure analyze करियर अछि तापरे cultural development भी analyze करियर अछि how did interactions between different communities shape the medieval Indian society this is the third demand of the question एबे हम demands बुझी गले एबे हमको clear कि body रे हमको को सब heading under रे को demands हमको address करिवार अछि introduction the Delhi Sultanate period 13th through 16th century जाए जो थिला it witnessed a complex social structure and rich cultural developments and ये जो interaction थिला various communities मानक भितरे जेमति कि टर्क्स हेले पर्शियंस इंडियंस Hindus and Muslims led to the evolution of a composite medieval culture. Right? First हमें देखिए social structure. Social structure. Society कौन थिला hierarchical थिला and stratified. माने caste आउ class divisions थिला and Muslims मानक भितरे भी divisions थिला जेमति टर्क्स हेले अफगान्स and converts थिले division among Muslims हिंदूस मानक भितरे भी वर्ण जाति सिस्टम रो कंटिन्यूएशन थिला वर्ण जाति सिस्टम इन हिंदूस ठीक अछि इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स
नुआ सोशल ग्रुप्स भी से टाइम रे इमर्ज होतले such as artisans like traders urban classes. Second, cultural development रे Indo Islamic architecture रो growth हेतिला. The growth of Indo Islamic architecture. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कौन जाउची जेमति कि आर्चेस डोम्स मॉस्क्स लाइक कुतुब कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन एज कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन इज कोर्ट लैंग्वेज जोटा कि सेही टाइम रे एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करथिला देन इमर्जेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड अर्ली फॉर्म्स ऑफ उर्दू और हिंदावी एंड लास्टली म्यूजिक पोएट्री सूफी लिटरेचर से टाइम रे फ्लोरिश करूथला religious and cultural interaction कौन थला फर्स्ट तो हमर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट अंडर आसी जिवे सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट से मैंने कौन करथिले दे प्रमोटेड लव टॉलरेंस सोशल हार्मनी केमिति के डिवोशन को कास्ट बैरियर्स रो बियॉन्ड जाई कि एम्फसाइज करा जाई परिबो ए सब ऊपर से माने फोकस करथिले देन हमर आसीबो शेयर्ड स्पेसेस like dargahs and temples जोटा कि सेंटर ऑफ इंटरैक्शन हेतला से टाइम रे कल्चरल प्रैक्टिसेस ब्लेंडेड leading to syncretic traditions नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ इंटरैक्शंस जो कम्युनिटीज भितर जो इंटरैक्शन होतला तार इम्पैक्ट कोन थिला इम्पैक्ट ऑफ इंटरैक्शंस डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर जाको गंगा जमुना तहजीब कहउथले गंगा जामुनी तहजीब reduction of rigid barriers in certain spheres in the art music languages however conflicts thila tensions thila existed due to the political and religious developments so ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ period it was marked by dynamic social and cultural exchanges where interaction between communities led to the formation of pluralistic and syncretic medieval Indian society influencing India's long-term cultural fabric. Finished? Next question. Discuss the significance of Article 20 polity question Article 25 and 26 of the Indian Constitution in ensuring freedom of religion. What limitations are placed on these rights?
क्वेश्चन पचारछि आर्टिकल 25 आउ 26 of the Indian Constitution जोथिरे freedom of religion grant ହେଇछि तार significance कोन discuss it. What limitations are placed on these rights? And rights the unlimited grant है नथिबो ता ऊपर भी किसी limitations थिबो, exceptions थिबो, restrictions थिबो. So what limitations are placed on these rights? How to introduce? Article 25 and 26 of the Indian Constitution, it grant right to freedom of significance of article 25 and 26. First 25 होची हमर कोन individual freedom grant करे, individual freedom. So it grants freedom of conscience, the right to freely profess, practice and propagate religion. ठीक अछि. And it is available to all persons. The citizens हुंतु नॉन citizens हुंतु एटा समस्त पई available, not just citizens. So एटा reflect कोन करे? It reflects India's commitment to religious plurality and tolerance. And tolerance. Article 26. Article 26 was the institutional freedom. It grants religious denomination the right to जो religious denominations माने रहिले सीए आंकु rights provide करे to manage their religious affairs, establish and maintain the institutions, own and administer property. ठीक अछि. So it ensures autonomy of religious groups. Now let's discuss the secular balance. Secular balance rate हमें देखिले, it promotes equal respect for all religions. It prevents state interference in essential religious practices while allowing reform. Now, what are the limitations imposed on these rights? They are subject to public order, morality, and health. एगुड़िक हूँ limitations. So state ए क्षेत्र रे कौन करि परिबो? State can regulate the secular activities associated with religion. For example, temple administration हेगला. तापरे आउ गोटे कोन social reform laws allowed. For example, जेमति की abolition of untouchability, then temple entry laws, courts apply the essential religious practices doctrine.
to determine protection. Okay. Restrictions be provide hochi to prevent forced conversions and exploitations. Against forced conversions and exploitations. Conclusion. Article 25 और 26 जो रहिला they strike a careful balance between religious freedom and societal interests. ठीक है जी. Ensuring that India it remains both secular and socially progressive. Next question. Evaluate the economic, urban and socio-cultural transformation during the Delhi Sultanate period. How did these developments influence the structure of medieval Indian history? हमें already ए सबु सब topics उपरे सब headings उपरे अलगा दीटा questions दीटा तीनटा questions हमें discuss करि सरचे. So we will just see कि हमें आकु कहाँ परे कोटा लिखिबा and केमती आकु structure करिबा. That's it. पूरा details रे जिबानी काहेकि ना पूर्व दीटा question रे सबु सब headings discuss हेजी. Bit by bit. Economic भी हमें discuss करचे, urban planning discuss करचे, social cultural transformations discuss हेची. How did this development influence? Read the questions. I'm giving 15 seconds. ଟିକେ lengthy question ଅଛି. So क्वेश्चन कहिला कि इकोनॉमिक अर्बन और सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जोड़ा दिल्ली सल्तनत टाइम रे थिला ताको इवैल्यूएट करबा को एंड ए सब डेवलपमेंट केमिति आगु को स्ट्रक्चर कला मेडिएवल इंडियन सोसाइटी ताको डिस्कस करबा को कहिजे. राइट. इंट्रोडक्शन रे दिल्ली सल्तनत time पकेबे 13th to 16th century. It brought the transformation in कोठी economic हला, trade हला, socio cultural spheres हला. ठीक अछि. Reshaping the medieval Indian history into more complex and interconnected system. First, economic ट्रांसफॉर्मेशन रे हमें देखिले कि तांकर सेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम थिला माने खरज हला इक्ता हला ए सब पूर्व क्वेश्चन रे डिस्कस हेची एंड टर्म्स गुडा भी मेंशन हेची. ठीक अछि. मु खाली एडजस्ट कहि दोछि कि कोन कोन इंक्लूड करिवे सब हेडिंग रे. देन हमर देखिले कि हमर एग्रीकल्चर रे एक्सपेंशन होची जेंति कि न्यू क्रॉप्स और इरिगेशन कैनल्स भी ए टाइम रे आसीथिले अंडर फिरोज शाह तुगलक. देन देयर वाज ग्रोथ सीन इन ट्रेड एंड कॉमर्स जेमति कि इंटरनल और एक्सटर्नल ओवरसीज इनलैंड ट्रेड एगुडा सब फ्लोरिश करतला. इंपोर्ट एक्सपोर्ट आइटम्स भी डिस्कस हेची. इमर्जेंस ऑफ द मोनेटाइज्ड इकोनॉमी जेमति कि टंका और जिताल कॉइन्स. राइट. अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जेमति कि मेजर सिटीज हला मेजर सिटीज रे राइज देखियो मिला जेमति दिल्ली लाहौर मुल्तान दौलताबाद एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिटरी सेंटर्स. देन हमरो ग्रोथ देखियो को मिलिथिला मार्केट्स रे आर्टिजन क्लस्टर्स रे तापरे गिल्ड लाइक ऑर्गेनाइजेशंस रे urbanization supported by the agricultural surplus and trade networks.
Socio-cultural transformation. Socio-cultural transformation. Interaction between Hindu-Muslim communities to cultural led to cultural synthesis. आमे देखिथिले कि हिंदू मानक भितर भी स्ट्राटिफिकेशन थिला, मुस्लिम्स मानक भितर भी डिविजन्स थिला एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, कल्चरल सिंथेसिस गोटे केमिति आसीथिला. ओके, देन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. जस्ट कहली सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स रे इंपोर्टेंस. Emergence of urban artisans and traders. Impact of medieval Indian society. Impact कौन थिला? जेमति कि गोटे पूरा एग्रेरियन ऑर्डर रो शिफ्ट है कि गोटे डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी को शिफ्ट हेतिला. अर्बन मिडल ग्रुप्स कर राइज देखियो मिलथिला जेमति कि ट्रेडर्स हले, आर्टिजन्स हले. डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर. हाउएवर किंतु सोशल हायरार्कीज से टाइम रे भी थिला, इनइक्वालिटीज भी थिला, दे परसिस्टेड. Conclusion. Delhi Sultanate period laid the foundation for a dynamic, medieval society. Characterized by what? Characterized by economic growth, urban expansion, and cultural synthesis. जोटा deeply influence करथिला later developments under the Mughals. Last question. The right to freedom of religion, Article 25-26, reflects the secular character of the Indian Constitution. Examine the scope of these rights and analyze the role of the judiciary in balancing religious freedom with the social reform. क्वेश्चन कौन पचारछि? क्वेश्चन कहिछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जोटा आर्टिकल 25-26. एक्चुअली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28 थाए किंतु एठी हमको 25 और 26 एड्रेस करिवार अछि. रिफ्लेक्ट सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ए स्टेटमेंट इसे देला. एग्जामाइन करिवा को कहिछि द स्कोप ऑफ द राइट्स एंड एनालाइज द रोल ऑफ द जुडिशियरी इन बैलेंसिंग रिलीजियस फ्रीडम विथ सोशल रिफॉर्म्स. Article 25-26, it embody the secular spirit
of Indian Constitution by guaranteeing the religious freedom while allowing the state to pursue social reforms and equality. Scope of Articles 25, 26. Article 25, individual freedom. Individual freedom grant करे, it grants the freedom of conscience, profess, एगुड़ा सब हमें डिस्कस करछे, profess, practice and propagate, ठीक अछि, and it is available to all persons, citizen हुअन्तु कि non citizen हुअन्तु. Then article 26 कौन करे? Article 26 institutional freedom grant करे. Institutional freedom जेमति कि जो religious denominations माने रहिले, they can manage, establish, own, administer property and religious affairs institutions jaha bhi rahila. Now what is the secular character? Secular character is it ensures equal respect for all religions. And state भी एठी कौन करूची? State भी एठी त निजको गोटे principled distance से maintain करी रखुची, not strict separation, काइना में limitations भी पड़िबा जोटी state रो role रही छी. State maintains principled distance, not strict separation. Not strict separation. Limitations कौन कौन? Limitations होची public order, morality, then health and state कौन करि परिबो? State secular aspect of religion को regulate करि परिबो. For example, administration of temples, enables the social reform laws, for example, abolition of untouchability, temple entry, role of judiciary. Role of judiciary रे हमें first हमें already गोटे question रे discuss करथिले, double हमें ताकू time spend करिबानी. Essential religious practice doctrine ऊपर टिके लिखिबे. जो कौन हुए कोर्ट डिस्टिंग्विश करे बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस. ओनली एसेंशियल प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन रिसीव करिवो. देन बैलेंसिंग राइट्स एंड रिफॉर्म्स. बैलेंसिंग राइट्स एंड रिफॉर्म्स रे एठी किछिटा केस नोट डाउन करिवे, जेमति कि शिरोर मठ केस. शिरोर मठ 1954. तो कोर्ट एटी कौन कला? रिलीजियस ऑटोनॉमी को अपहेल्ड कला. साबरीमाला 2018 साबरीमाला केस रे एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन वाज स्ट्रक डाउन एज डिस्क्रिमिनेटरी. देन शायरा बानो triple talaq. Court invalidated arbitrary practices.
तापरे हमर आसीबो एक्सपैंडिंग द फंडामेंटल राइट्स एथिरे कोन करा जायछि रिलीजियन को डिग्निटी इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सहित लिंक करा जायछि ठीक अछि कंक्लूजन Article 25-26 it ensures religious liberty within a constitutional framework while judiciary एठी कोन करछि गोटे crucial role play करछि in maintaining the balance between what between faith and reform strengthening India's inclusive and progressive secularism ठीक अछि and with this question आज हमर आंसर राइटिंग डिस्कशन क्लास एंड हेछि थैंक यू फॉर वाचिंग नेक्स्ट क्लास आपण जहा मॉक देबे सेटा को हम डिस्कस करबा सेम 6 टा क्वेश्चन रहइबो ओके थैंक यू